So, very warm Merry Christmas to all of you. And let us start today with a very positive, on a very positive note. So, yes, the show must go on. So, we are starting the class with the next lesson, which is memorandum, or what is a memo. In the last class, I already explained what is a memo. So, memo is a short form of memorandum, which is the word has been taken from a Latin phrase, memorare. It means to remember. So what is memorandum? Something to remind, something which will help you to remember things. So memorandum, a Latin phrase, which means, what does it mean? A memo or memorandum meaning reminder is normally used for communicating within the organization, related to any business or any official business, any information, any procedures, any policies, or any work related issues. The memos are issued. Sometimes we issue memos for disciplinary action. If you are coming late or if you are not doing your work properly, then you can get a memo, which is a warning, a kind of a warning for you, so that you can understand things. You can get a memo for paying your fees, a reminder. So actually memo is nothing but a reminder, something to remind somebody of something. And in the last class, as I said, memos can be written horizontally or vertically. It means the communication flow of a memo is from top to bottom. It means persons working in the higher authority, for example, a general manager, he is a higher authority, he can issue a memo to the manager or anybody working under him. This is the communication flow. In technical business communication, we call this communication flow of the memo is either downwards or it is horizontal. Horizontal persons working in the same hierarchy. For example, a faculty can give a issue, can give a memo to a faculty. This is horizontal on the same level, right? And from top to bottom, which is vertical, downward flow from top to bottom, right? And then we discussed about that, how memos can be used and be issued in groups, or it can be issued individually. एक को भी दिया जा सकता है और ग्रुप में भी दिया जा सकता है. और कम्युनिकेशन फ्लो इसका होता है, ऊपर से नीचे आता है, हाथ से नीचे बोलते हैं आप, नीचे से ऊपर नहीं आता है. अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं है इसमें. The communication flow is never upward. A person working in a lower hierarchy cannot issue memo to somebody working in the higher hierarchy. So, nutshell, memos have been taken from the Latin word, which means to remember. Students, please unmute yourself, otherwise you will not be able to listen. So it is normally used to communicate inside the organization. You cannot give a memo to somebody working outside your organization. जब भी memo issue होता है, organization के अंदर में ही होता है. और ये क्या क्यों दिया जाता है? It can be given to serve any information, कोई information जाता है. Anything, any procedure, any policy, anything which is work related, which is useful within the organization. It can also be issued to praise somebody. इसने अच्छा काम किया है तो भी memo issue होता है.
किसी ने अच्छा काम नहीं किया है तो वो भी आ जाता है, the warning memos are issued, right? So it is often written from one to one and one in a group. Like one person can write a memo to one person and one person can write a memo in a group. So it can be written individually and it can be written in a group. When it is written in a group, it is like mass communication, like broadcasting a message to an audience or rather than one to one, interpersonal communication. So ये क्या होता है? One person can give it to the entire group. For example, the general manager can issue a memo to the all staff of the organization. So it may also be used to update a team on activities for a given project, or to inform a specific group within a company of an event, action or observation. तो किसी भी चीज के लिए any internal information के लिए memos are issued. Remember one thing, a memo is never a letter. A letter cannot be a memo. So you have to be very particular when you're writing a memo, keeping in mind that this is not a letter, this is a memo, which should always be written in a very concise way, in a very short way. So why do we write a memo? The questions can be why do we write a memo? You can write a memo to, as I said, you can inform, you can tell a person what to do. You can, when you're very happy, you can praise somebody, or you can, when you are angry, when you're not, when you see that something is not working well, you can also issue a memo. More or less, you can understand in a nutshell that memos can be used for any kind of information within the organization. And to keep in mind is memos cannot be upward. The memo is always downward. ये upward downward क्या होता है? मतलब upward कोई भी lower hierarchy में higher hierarchy को नहीं भेजते हैं memo. Like you cannot issue a memo to somebody working in the higher authority. But yes, the higher authority can give a memo to you. And it can be given horizontally. It means people working in the same hierarchy. For example, if you're a manager, you can send a manager. If you're a manager marketing, you can send a memo to a manager production. It's the same hierarchy. Or if you're an assistant manager, you can give it to assistant manager. If you're a management trainee, you can give a memo to a management trainee. So this is how it goes. So the format of a memo. The format of a memo is very simple. First of all, when you're writing it on a letterhead, that is quite simple. Take a letterhead. If you're writing it on a letterhead, write memo at the center of the page, and then heading after the name and address of the company. This is the letterhead. The name and address of the company is already given in the letterhead. We type the word memo or memorandum at the top of the page in the center. Now, why don't you start doing it? आप बनाना शुरू कर दीजिए, एक पेज ले लीजिए और सबसे ऊपर लिखिए memo. Or you can write the full form memorandum. And then recipient, address the recipient in the respective format. For example, to all employees of the sales division. It means सबसे पहले आएगा, after you write memo, leave a space and then you write recipient. It means किसको भेजना है आपको. So you write to, for example, this is a group memo to all employees of the sales division. तो यहाँ पर dear sir salutation नहीं होता है, complimentary close भी नहीं होता है. There is no salutation.
There is no complimentary clause, but yes, you can go direct, like to all employees of the sales division. This is just a format I'm giving you about. And then the writer's name, from Mr. ABC or from Mr. Shukla or whatever, as it is written, from Mr. ABC sales head of sales. तो फॉर्मेट बहुत इजी है, मेमो लिखना है, टू लिखना है, किसको लिख रहे हैं, और फिर फ्रॉम लिखना है, कौन लिख रहा है. Like to all employees of the sales division, and the writer is from Mr. ABC, head of sales. Additional recipients में डाल सकते हैं. If you are writing in a group, write the names of the people, and these are the people who will receive a courtesy copy of the memo. We don't address the memos to them, but we keep them in the loop. Loop में रखते हैं हम लोग. लेकिन अगर to all sales है, तो we give a copy to the department so that everybody gets to know what the message is all about. And then सबसे पहले to, from, उसके बाद date. You leave a white space and then you write the date. The date of the writing the memos is an important detail that one must include. Update क्यों important है? Why is any date important? So that you want the recipient to know कि ये date आज का है, पहले का नहीं है. So that is why in any letter or any memo, anything which is documented officially, it must include date. So to, from, date, and then the subject line. Just like a letter, subject line is very important. So this will give the reader an idea about what the information is all about, what information you want to give to the recipient. And the line, similarly as in a letter, line brief होना चाहिए, precise होना चाहिए, and to the point होना चाहिए. Do not write long sentences in a subject line, right? For example, if you are the manager and you are issuing a memo to somebody who's coming late, what will you write? Subject line will be issues regarding late coming. So it has to be concise and precise, and it has to be to the point. Memos बहुत long नहीं होता है. Memos should always be concise and simple. And then the body, after the subject line, leave a space and the body of the memo. This is where all the information is contained in the body. A formal salutation is not required in a memo. Formal salutation मतलब dear sir, dear ma'am, not required. Ravi Raju को समझ में आ रहा है? Hello? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. मैम इस मैम टिपिकल यूज ऑफ मेमोज में क्या क्या होगा मैम? क्या पूछ रहे हो मैम? एक्सक्यूज मी मैम पूछने रहे हैं कि मैम टिपिकल यूज ऑफ मेमोज में क्या क्या होगा, जैसे तो यूज किस तरह से करें मेमो का, सब पूछ रहे. कोई भी इंफॉर्मेशन तुम किसी को देना चाहते हो तो मेमो इश्यू कर सकते हो. एनी इंफॉर्मेशन, एनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन व्हिच यू वांट टू गिव, वो तुम दे सकते हो. Any kind of, it can be any information जो important है organization के लिए. ठीक है? ओके मैम. ठीक है. Any kind of information जो कि official information होता है, it can be shared within the organization. ठीक है? और subject line के बाद आप लिखते हैं body of the message, the main. This is where the information is contained. जो आप कहना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं. A formal salutation is not required. Dear sir, dear ma'am जो आप लिखते हैं लेटर में, यहीं पर फर्क हो जाता है कि ये मेमो है और ये लेटर है. इसलिए सबसे ऊपर में मेमोरेंडम लिख दिया जाता है कि this is a memorandum. Okay. And dear sir is not required. Yours sincerely या अपना नाम साइन
कोई जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आप ऊपर में डाल चुके होते हैं to and from. Your name already is there, so you do not. There's no need to. It's not required that you sign give the complimentary clause. Yes, ma'am. So the body. Oh, this is where your information is contained. A formal salutation is not required in a memo. Many people have written earlier also, dear sir and dear ma'am, and they've got it all wrong. This is what happens. This is why it happens, because you're not paying attention in class. अगर अटेंशन पे नहीं करेंगे तो फिर आप वही करेंगे जो कि जो पे अटेंशन नहीं करते हैं वो लोग गलतियां करते हैं, then all the marks are deducted. तो इसमें सिंपल जैसे एक बॉडी पार्ट होता है, सब्जेक्ट लाइन होता है, नो डियर सर, नो योर सिंसियरली, योर नथिंग. So the body must not be too long, and keep this in mind that your body should not be very long. When you're sending the memo, keep in mind it should not be too long. The ending must restate the issue and end on a positive note. जब भी आप end करेंगे कोई भी letter या कोई भी memo, anything documented, any document which is official, हमेशा it should always end on a positive note. अगर आप किसी वार्निंग भी इशू कर रहे हैं तो वो भी एक पॉजिटिव नोट में होना चाहिए, लाइक होप दिस डज नॉट हैपन अगेन, ऑल गुड लक, इस तरह से लिखते हैं ताकि एक गुड विल कंटिन्यूड रहता है. किसी को रूड, आपने देखा था कि रूड नहीं लिखा जाता है, कंसिडरेशन होना चाहिए एनीबॉडी, किसी के लिए भी. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेटर होता है व्हेन यू आर राइटिंग एनीथिंग इन अ पॉजिटिव नोट, ऑन अ पॉजिटिव नोट, सॉरी. एंड अगर आप as I said, complimentary clause जरूरत नहीं है. Before you send a memo, proofread. It means read it, and finally proofread the memo before sending it, so that you're sure that nothing has gone wrong, and everything is in the right place, and the message which you want to convey, जो आप बोलना चाहते हैं वो already stated इसमें है. नहीं तो फिर you will be in trouble. So whatever messages you're writing in official messages should always be proofread. पढ़ करके उसको देख के समझिए सही जा रहा है कि नहीं, any error है कि नहीं, कोई spelling error तो है कि नहीं. So correctness is also very important in the 7 C's of communication. This you already know. Now this is your an assignment which I want to give you. इसमें कुछ और इसका राइटिंग स्टाइल होता है कॉन्वर्सेशनल. किस तरह का लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? राइटिंग स्टाइल इज कॉन्वर्सेशनल. मैम प्रूफ रीड क्या होता है? प्रूफ रीड का मतलब क्या बोल रहे हो? प्रूफ रीड का मतलब क्या होता है मैम? मतलब उसको रिवाइज करिए, उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार फिर से, कहीं गलती तो नहीं है. ठीक है, तो कहते हैं प्रूफ रीड. एक तरह का मतलब जो मैसेज जैसे जिस तरह सेंड से आप करते फोन से हैं वही ना मेमोरेंडम हुआ मैम? हेलो, यस मैम. क्या बोल रहे हो? मैम जिस तरह से क्या पूछ रहे हो? मैम जिस तरह से मैसेज सेंड करते हैं मोबाइल पर वही ना मतलब मेमोरेंडम हुआ, जैसे टू फ्रॉम सीसी करके इस तरह से. हाँ, तो एक बॉक्स बना के होता है. बॉक्स में. ठीक है, मोबाइल की दुनिया थोड़ा सा आगे निकल लीजिए और ऑफिशियली मेमो क्या है वो ये बनाना शुरू कर दीजिए. आई एम गिविंग यू वन असाइनमेंट. लिखिए आप. असाइनमेंट के लिए है ये मेमो. Write a memo to the accounts department. Write a memo
to the accounts department asking them, अब देखिए टू किसको देना है, टू ऑल, टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, सबको नहीं देना है ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ उनको देना है जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो टू कैसे लिखना आप समझिएगा। तो राइट ए मेमो टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट asking them to attend a training program, asking them to attend a training program write a letter to the accounts department asking them to attend a training program about new software the company has adopted. About new software the company has adopted. मैम मेमो 2 के बाद क्या था? A memo to the accounts department asking them to attend a training program, asking them to attend a training program about the new software the company has adopted. The company ने नया सॉफ्टवेयर अडॉप्ट किया है, उसको ट्रेनिंग देने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट का को मेमो जा रहा है, ठीक है। यस मिलिंद पढ़ो, क्या व्हाट इज असाइनमेंट? Write a memo to the accounts department asking them to attend a training campaign about a new software. About the new software that the company has adopted. Yes, ma'am. रविराज समझ में आया तुमको? यस मैम। Hello? मैम यस मैम। मैम मेमो लिखना है अकाउंट डिपार्टमेंट के पास, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम न्यू सॉफ्टवेयर को ट्रेनिंग लेकर प्रोग्राम शुरू करना है हम लोग, और शुरू। न्यू सॉफ्टवेयर हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो टू किसको लिखोगे? टू ऑल मेंबर्स ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। टू द हाँ मेमोज ऑफ From? द अकाउंट्स डिपार्टमेंट को लिखेंगे। टू फ्रॉम लिखेंगे। हाँ, फ्रॉम फ्रॉम द अकाउंट्स मैनेजर। अकाउंट्स So you are the मैनेजिंग accounts लिखेंगे। manager, right? अकाउंट्स मैनेजर, यस। Managing? Accounts manager, yes. So you मैनेज become the accounts manager and you... Ma'am, we have to write a memo to account Yes, department that asking them to attend the training, I think training program about the software, right, ma'am? about the software the company has adopted. Yes, ma'am, adopted. कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कंपनी ने नया Yes, ma'am. है, Company has उसको adopted. सबको सिखानी। Yes, this is your assignment and please submit this next week, right? And you're asking for 20 marks on this. You can also include what is the memo, whatever you know about the memo, you write that also, and then Ma'am, you do write we this have assignment. Ma'am, do we have to submit it in our copy or something else? You have to submit in a stick file. Okay, ma'am. ठीक है, तो stick file में submit करना, and you are asking for 20 marks, 10 marks. I do not want to give anybody 3 or 4. Please make it. Please try to score at least 7, 8 marks, right? Neat and beautiful, right, ma'am?
Yes, neat and beautiful. तो कैसे ले, एक बार हम बता देते हैं आपको, ठीक है, कैसे करना है। तो टू क्या लिखेंगे, पहले ऊपर में लिखेंगे मेमोरेंडम, राइट, फिर लिखेंगे टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट फ्रॉम मिस्टर रविराज, हेड ऑफ अकाउंट्स, रविराज हेड ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। एंड सीसी में भेजेंगे किसको, सीसी टू मिस्टर मिलिंद ऑफ एबीसी एचआर डिपार्टमेंट। जो भी आप करेंगे एचआर को पता होना चाहिए ना, वट एवर यू आर डूइंग। अकाउंट सेड सीसी किसको दे रहे हैं, मिस्टर मिलिंद को दे रहे हैं फ्रॉम द एचआर डिपार्टमेंट। एंड व्हाट विल बी द अभी आप क्या बोली, फ्रॉम के बाद? मैंने कहा फ्रॉम मिस्टर रविराज अकाउंट हेड टू मिस्टर Ma'am, repeat again. मिलिंद कुमार ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। और डेट आप दीजिए, whatever date you are submitting, write the date. And what will be the subject? About the new software that the company has adopted. Yes, compulsory training. Compulsory training of the new software. Compulsory मतलब इसमें सबको आना ही है। So मिलन क्या लिखोगे, this subject line भी हो गया। Now leave a space and then write the message. Message क्या होगा? What will you write? And this is to inform you all that on the specific date, you all are cordially invited to attend the training campaign about the new software that company has adopted. It is compulsory for. Seminar. Yes, ma'am. A training seminar. Yes, Training ma'am. seminar. Or you can Yes. say, as you all are aware, जैसा कि आप सब जानते हैं, we have recently adopted a new accounting software. As you are aware, we have recently adopted a new accounting software. And why was the decision? The decision was taken to improve our accounting procedure. Decision was taken to improve our accounting procedure. A training seminar will be held on the 5th of January 2022 at 9 a.m. So all are required to attend the same. All employees of the department are required to attend. So, and then you can write a thank you. Do not copy my words. I'm just giving you an idea. Like, इसको करिए और submit कीजिए. Business मैम English में workshops बहुत written part बहुत ज़्यादा. Just like in maths में आप करके सीखते हैं ना. Similarly आप business English में जब तक कि आप लिखेंगे नहीं ना, अब समझ में नहीं आएगा. एक बार आपने मेमो लिख लिया बस, फिर तो कोई बात ही नहीं है. कहते हैं the first step is always the hardest. जब first step आपने ले लिया है, लिखना शुरू कर दिए हैं, मैंने आपको कहा था कि maintain a copy for business English. आज तक किसी ने दिखाया है नहीं, किसी ने भी नहीं दिखाया है, and you already taken your first semester test. Nobody has submitted any copy. Nobody has shown any assignment. Why is that?
So any question do you have? Ma'am, is there any word limit or? So एक बार फिर से समझा देते हैं मेमो का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. A memo has a header that clearly indicates who sends it and who the intended recipients are. सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाता है सामने कौन भेज रहा है एंड किसके पास जा रहा है. And you have to pay particular attention to the title of the individuals in this section. इस section में आपको बहुत जरूरी है कि if you are sending it to a person, his name and his job title should always be there. जैसे हमने लिखा था, this is from accounts head, the name of the person should always be there. And CC to अगर CC किसी को भेज रहे हैं, उनका भी नाम and designation बहुत जरूरी है. जैसे मैंने कहा था, Milind, who is the HR of any company. पूरा नाम होना चाहिए और पूरी job title होनी चाहिए. This is very important. And date also is important. Date and subject lines are also present, followed by a message. So do not forget any point. Ma'am, one page is enough for this. Yeah. One page is enough for this assignment. How many pages? For memo, one page. Make a box and write in that. Otherwise, what is a memo? Define memo. The communication flow of a memo. That will take 2 pages at least. Thank you. 1 या 2 पेजेस ना मैम एटलीस्ट. पेपर शीट मतलब ये स्टिक फाइल में अटैच कर लेंगे. क्या पूछ रहे हो? स्टिक फाइल में ये पेपर शीट मतलब अटैच कर लेंगे एटलीस्ट 1 या 2 मैम. आपको डालना है एटलीस्ट पर कंपाइल 5 पेजेस. पहले पेज में तो आप टाइटल पेज रहेगा, आप लिखेंगे मेमो बाय, किसको लिखा हुआ है, किसको सबमिट करना है. फर्स्ट पेज तो टाइटल पेज हो जाता है. उसके बाद सेकंड पेज में टेबल ऑफ कंटेंट्स रहेगा. राइट? क्या डेफिनेशन ऑफ मेमो, पर्पस फॉर मेमो, टेबल ऑफ कंटेंट, जो भी आप डालना चाहेंगे आप डाल सकते हैं. यूजेस ऑफ मेमो, एडवांटेजेस ऑफ मेमो, and then you're writing and then finally the assignment on memo. So table of contents second page हो जाएगा. Third page से आप you start writing your memo definition. अच्छा मैम. किसी ओके. भी असाइनमेंट करने के लिए ये सबसे पहले टाइटल पेज, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसके बाद whatever टेबल ऑफ कंटेंट में डाले 5-7 चीजें, वो सारी की सारी चीजें होना चाहिए. And then finally conclusion. Conclusion should always be in the last page, so that what have you understood on the term, your understanding and your feedback on memo. Right? तो 3 चीजें तो by default रहना है, title page, table of contents and conclusion. 3 पेज तो ऐसे ही निकल गए आपके. उसके बाद 2-3 पेजेस और आप डालेंगे जो कि टेबल ऑफ कंटेंट्स. ईच कंटेंट का डिफरेंट पेज होना चाहिए. एक डेफिनेशन भी उसी में है, पर्पस भी नहीं. हर पेज की अलग अलग होनी चाहिए. ठीक है? तो एक स्टिक फाइल में एटलीस्ट अगर तरीके से लिखेंगे आप तो 7-8 पेजेस डल जाते हैं उसमें. Anything you want to ask? Any question? Hello? Any question you have to ask? No, ma'am.
No, ma'am. Okay. It's not. No, ma'am. Fine then. All right then. I'll see you next week. Ma'am, attendance. Bye. Yes, ma'am. Attendance. Ma'am, attendance. Attendance. Taken. Ma'am,